Students, we have gone through unit 1, unit 2, unit 3 on education and examination. Okay, students, 2 minutes deliberation. 2 minutes deliberation relating to on examination. You can come and say relating to on examination from your own point of view. We have gone through 3 units. 3 units have been completed, students. For your deliberation, you can at least say something relating to in the unit class. You can come and say something relating to an examination. Understanding of the topic is crucial. We have to publish here today, students, unit 4. Only one unit has been read. So, what is your grasping idea relating to on examination? Yeah, see what 2 minutes on examination. Who will deliver something else? Amrita. Anybody else? Who can say something else relating to on examination in English? Not in Odia or in English. Option. Why you are absent? You must have to understand the online classes. We have certain type of definition related to online. You are giving online classes, offline classes. These are the opportunity for the students who are absent. But if it cannot take place when you are not looking your temperament relating to the absent classes. But class the absent रहिला anyway to चेष्टा करो. And you have good friendship. Friendship circle में मतलब बुझी करियो. Limma is absent today. Anybody else? Rasmita? You can say something relating to education. Education relating to examination. 2 minutes. Come and say. No. On examination. Come to the front. One who speaks becomes the leader of the class. Thereafter, who will be available must say something else. So, procedure of talking, you must be looking about since it is evening. What is the topic assigned to? Thereafter. Good evening, everyone. Thanks for the lecture for giving me a chance to present the topic. I'm going to present the topic unit 2 from the contest on examination. Here, in the unit, the right place the writer Western Chakri highlights the importance of the teacher in making a career of his students. The writer shares his experience. Here, the writer shares his experience of studying at Harvard, and he shares that his
He was placed among the weaker students in the Harrow school. So the students of London, the Greeks and Latin languages, and gave examination on both the languages. But writer before to learn English. And thanks to Mr. Somerville's appreciation, the teacher, the writer. Listen to the students, Somerville. Who was Somerville? The English teacher of Winter. Very nice. English teacher Somerville. Then. Thanks to Mr. Somerville's unique teaching method, he used scholarly and drafted breakdown complex exercises, helping students to gain more knowledge. By this, he used in red and blue color, and they. While speaking doesn't matter. When you're looking at the speak, doesn't matter what you are speaking. He must have to proceed. It may be grammatical sentences in subject, verb, object, and object, verb, object, conjunction, disconjunction, etc. The writer describes lower class for the long time. Somerville's method of teaching, just marking the words, underlining what she told, just demarcating the lines to colorful movements, as well as to colorful memorization. And what is that method? What is that method? Somerville utilized colorful ways of sentence forming. That means fragmenting sentences into different types on the basis of their actually synchronization of word formation. प्रत्येक वर्ड तले कोटा सब्जेक्ट कोटा verb कोटा object कोटा complement कोटा adverb ताकि से कलरफुल वे रिप्रेजेंट करथिले हमको इंग्लिश में कोन कह जाय से बुक रे भी अछि पासिंग मेथड. Try to understand each and every word so far as English literature is concerned. That method is known as parsing. Then the writer described being in the lower class value English highly, and later he realized this gave him a strong foundation in communication and life. He also built his career a lot by the English. We believe all students should learn English before learning classical languages like their Greeks and Latin. We believe that learning English is more practical than the classical languages like Greek and Latin, as it helps in career and communication. To conclude, Mr. Somerville is remembered by the writer with great respect. He showed how a teacher who patience can turn weak students into strong learners. He appreciated the writer a lot to learn English. For him, he mastered thoroughly in English. Thank you so much. If I said something wrong. Thank you. Okay, students, what Lemma told that what would be the analysis of the on examination response. Towards the end, towards the conclusion, Lemma remarked that it is a responsibility of a teacher to make the learner or process in brilliant words. How the method, what type of trick ought to be utilized? By this, the teacher would be dynamic and the students would be the dynamic principles to appreciate the world community related to the. If anyone is next, if anyone is from your own part of the students, I am not following anybody since they have completed. If you go on, if you I am not three towards the conclusion. A good minute achieve. तम whole point of view रो ठीक है elaborate करी कहने को चेष्टा करो. If anybody is Rasmita, okay, answer will say, come and say. Good evening now. Good evening. First of all, listen to me students. Language is nothing but a communication. When your friend is telling good evening, why are you silent? Good evening. First of all, thank you, sir, for giving me this opportunity to express my ability in front of my dearest friends. Very nice. The story on examination was written by Winston Churchill, who was the former Prime Minister of Britain. In this story, Winston Churchill focuses on his childhood
as well as her schooling days. Mr. Churchill was not a very good student at his school times. Still, he loved subjects like history, poetry, and writing essays. But when he gave an examination at Harrow, the examiner put the questions from Greek, from Latin, and mathematics more. But with the help of his principal, Dr. Weldon, he entered the Harrow School. At that school, he had 4th standard and section 3, section 3rd. As his name starts with S, his roll number was very large, very back and side. In the sequence, it was towards the bottom. Yes. Yeah, proceed. After that, some people in that school, gave a comment due to his back position in their class, as he was the son of finance minister of that of the Britain. Great Britain, and you must be knowing, students, in India we have 2 houses, one is Lok Sabha and one is Rajya Sabha. It is similar to that of Lok Sabha, that is House of Commons, and that of Rajya Sabha is nothing but House of Lords in Great Britain. And he was the finance minister, the minister for executive. Very fine to remember, students, such a personality, whose father was a cabinet minister, and his son was a very dull, not actually clever, not a very talented. Still then related to the opportunity, how opportunity gets an perfect as well as the dynamism. His father was the cabinet minister, and his son became the prime minister. That is the principle relating to opportunity and what you are articulating. How you are articulating it matter. Okay, thank you. I know I was not a good speaker of English. Still, for your attention, thank you so much. Thank you, sir. Okay, students, Austin told that he was not a good speaker of English. This is the class. And just try to remember, if you will articulate it, not only consumer, but almost all the students towards the end of October. Towards the end of October, you must all be excellent. And you must be knowing, students, learning without articulating is similar to that of meeting without digestion. ତମ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପରିସ୍ଥିତି ଏମିତି ଆସିବ ପ୍ଲସ୍ 2 ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ସରିଲା ପରେ ତମେ ବି କୋଉଠି ଇଂଲିଶ ମିଡିୟମ ପିଲାଙ୍କୁ ଟ୍ୟୁସନ କରିବ। ଇଂଲିଶ ମିଡିୟମ ପିଲାଙ୍କୁ ଟ୍ୟୁସନ କଲେ ତମେ ଯଦି ଓଡ଼ିଆ ମିଡିୟମ ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼େଇଲେ ତମର ପକେଟ ମନି ମିନିମମ୍ ଆସିବ। ଯୋଉଠି ପିଲା ଟ୍ୟୁସନ ହୁଅନ୍ତି ଆଟଲିଷ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ କରନ୍ତି ମ୍ୟାଥ୍ ଇଂଲିଶ ସାଇନ୍ସ ଉପରେ। ଆଉ ମନେ ରଖ ଇଂଲିଶ ମିଡିୟମ ଇନ ଦି ସେନ୍ସ ଅଲ୍ ଟପ୍ ମୋଷ୍ଟ ଇଜ ନଥିଂ ବଟ୍ ଇଂଲିଶ। So this procedure is vital so far as the presentation is concerned, students. We are getting to the end of the 3rd unit, and a great opportunity as well as appraisal to all of you. You are the great audience for whom they two could speak. ତମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ତମମାନଙ୍କର ସାଇଲେନ୍ସ ଏବଂ ଆର୍ବିଟ୍ରାରୀ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ପାଇଁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଭଲ କହିପାରିଲେ। Thanks a lot. Good doubt. So those who were the leader of the lower house, he was the prime minister, he was the head of the assembly, he was the prime minister. While Lord Landgraf was the leader of House of Commons, still he was finance minister. Why he was not a prime minister? Listen to me. When the leader of the house is there, that is relating to presidency, but not leadership. And you must be knowing Sonia Gandhi was the leader of Congress. During the Manmohan Singh was the prime minister. Try to understand my point of view. It depends upon their cabinet colleagues. It depends upon the elites. Same way, that would be the sole goal. Okay, students, I am complete करूँगे. जो मन पर जो doubt रहेगा, towards the end, I will provide you 10 minutes to discussion about the doubt classes. Okay, students, it's page 62. I soon crumbled out of the other side and found myself surrounded by an agitated crowd of younger boys. You are in for it, they said. Do you know what you have done? Listen, students.
Guilty mind always suspicious and it compels everyone to make you blameless. ଯେତେବେଳେ ସୋସାଇଟିରେ ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭୁଲ କରିଦେଲେ ତାପରେ ସବୁ ଲୋକ ମାନେ ଆମକୁ ଟିକେ ରେକ୍ଟିଫାଇ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେନି ବରଂ ଦେ ୱିଲ୍ ଟ୍ରାଏ देयर बेस्ट टू स्कैंडलाइज अस ସମସ୍ତେ ଆମକୁ ଟିକେ ବଦନାମ କରିବାକୁ ସମାଜରେ ଚାହିଁବେ ତମେ ଦୁନିଆରେ କୌଣସି ଭୁଲ କାମ କରିଦିଅ ସମସ୍ତେ କହିବେ ସେ ପିଲାଟା ଟିକେ ଭୁଲ କାମ କରିଦେଇଛି କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟେ ଲିଡର କଣ କରିବ ତାର ଯୋଉ ଭୁଲଟା ଅଛି ତାକୁ ରେକ୍ଟିଫାଇ କରିବା ପାଇଁ କୋଶିଶ କରିବ ଟ୍ରାଏ କରିବ what the topic says about I soon scrambled out of the other side ଯେତେବେଳେ ସ୍विମିଂ ପୁଲ ବା ବ୍ୟାଚିଂ ରେ ତାକୁ ଟାଣିକି ନେଇ ଯାଇଛନ୍ତି କାର ନା ଆମ୍ରିର ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମାନେ ୱିନଷ୍ଟନ ଚର୍ଚିଲ କି ସେ ସେତେବେଳେ ଭାବିଛନ୍ତି ପାଣି ଭିତରେ ବସି ସେପଟକୁ ପଳେଇବି ବଟ୍ ହି ଇଜ ୱେଲ୍ ସରାଉଣ୍ଡେଡ ବାय ଆମ୍ରିର ଯୋଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମାନେ ଥିଲେ ତାକୁ ସରାଉଣ୍ଡ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି ଏଜିଟେଟେଡ ମୋଡ ରେ ଏଜିଟେଟେଡ ଇନ ଦି ସେନ୍ସ ଆଙ୍ଗ୍ରି ମୋଡ ରେ ଆମ ସାଙ୍ଗକୁ ଆଜି ପାଣି ଭିତରକୁ ଠେଲି ଦେଇଛି ଆମେ ମଧ୍ୟ ତା କଣ କରିବୁ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଟୁ ରେ ତାପରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆକ୍ସନ ନବୁ इट्स amre he is in the sixth part इट्स एटी काहे की यूज करा गला हमरे तो गोटे पुआ से जगह ही जे था इट्स काहे की यूज करा गला ऑन द बेसिस ऑफ हिज पोजीशन हमरे पोजीशन कोन थिला 6th स्टैंडर्ड रे सचिनकर पोजीशन कोन थिला 4th स्टैंडर्ड रे 2 इयर सीनियर so student try to understand its meaning it's amre he is in the 6th or 6th standard he is the head of his house listen to me head of the house in this sense monitor of his class leader of his class very dynamic so far as acquisition of oneself calibrity or quality is concerned so he is a champion at gymnastics so this champion thila he has got his football colors फुटबॉल कलर्स इन द सेंस जो माने फुटबॉल मैच रे भलो टिके शो अप करथले ग्रेजुएट नंबर अंडर ताकू गोटे क्या मिलतिला हमर जेंति कप मिलछि शील्ड मिलछि विनर मानकु जेंति भलो भलो जो माने होते मैन ऑफ द मैच किबा मैन ऑफ द सीरीज मिलछि सेंति फुटबॉल प्लेइंग रे तापर एक्सीलेंस थिला कहा थिला अमरीकर तमे पर्टिकुलरली जानिबो स्कूल रे पाठ पढो तम क्लास रे तमे हाईएस्ट मार्क रखले लोक जानिबे कि सर माने जानिबे कि भलो परफॉर्मेंस कला किंतु गोटे फुटबॉल टीम गोटे क्रिकेट टीम का देले कोन हबो तो खाली टिके registration का नंबर टेन और दिया तेंदुलकर स्टैंडर्ड 10 विराट कोहली 12 try to understand my point still then they are the experience of the PhD holder में ताकि काम खेल रखुଛନ୍ତି ताकु प्रशंसा करूଛନ୍ତି एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी रे जनकर बेनेडिक्शन आसी पाए जनकर पोटेंशियलिटी आसी पाए so students they continue to recount his many titles to fame and reverence and to dilate upon the retribution that would fall upon me actually students success always succeeds try to understand success always succeeds जेतेबेले पिले मन रखा तमे सक्सेसफुल अचीवमेंट पाइबो सेतेबेले तमे कोनसी गोटी इंस्टीट्यूट रो स्टूडेंट हो आउट खूब से गोटी सप्ताह भीतर रिजल्ट आउट होची आर्ट्स और साइंस रो जेतेबेले ऑल ओडिसा टॉपर होबो से कोनसी गोटी कॉलेज रो टॉपर होबनी ऑल ओडिसा रो टॉपर जेतेबेले गोटे पिला मन रखा ता डायनामिज्म बा पोटेंशियलिटी शो करला आमी जेतेबेले कहूचे तमे वर्तमान तमे फैमिली हिसाब रे कंसीडर करछ मु होचे आपको फैमिली रो बापा मां एया मु सक्सेस पाई गेल कि जेतेबेले तमे सक्सेस पाई जिवो जेतेबेले कंसीडर करता जिवो ए होचे गोटे इंडिया रो फेयर दैट इज द एलाबोरेशन दैट इज वन क्वालिटेटिव डेवलपमेंट तो आमी जेतेबेले कोनसी पोटेंशियलिटी की शो करछांती ऑलमोस्ट ऑल प्रेमिस मोड रे रहिले एते टैलेंटेड पिला उनका क्लास रे हेड बॉय कलरफुल पर्सनालिटी सो फार एज फुटबॉल इज कंसर्न इतना डायनामिक पर्सनालिटी तमे कोन कहि ताकि पानी पे टेबिला समस्त रिक्वेस्टिंग ऑर्डर करसिले समस्त चाहिले जे प्रकृति रे गिल्टी कोन थिला चर्चिल कर ताकु शो करिवे रिकाउंट इन द सेंस कोन कोन जने कहिबा को गेले कहानी को गेले रिलेटिंग टू द मिस्टीरियस एक्टिविटीज ऑफ विंस्टन चर्चिल सो स्टूडेंट्स आपरे जो माने वर्डिंग रहउची पर्टिकुलरली दे वांटेड टू रिकाउंट इन द सेंस जने कोन जने कहिबा को आरंभ करले रिलेटिंग टू क्वालिटी ऑफ अपडेट नेक्स्ट स्टूडेंट्स Is many titles in the sense title holder पे देखिए हमरे इनका कौन achievement अच्छी that was actually broadcasted that was live telecasted by the friend of हमरे को friend मान का द्वारा सब गुड़ा लोग मान को कौन समस्त ताकि कन्विंसिंग कर पाएगा सब गुड़ा एलाबोरेटली उसे इतनी पकड़े रेफरेंस जेतेबेले तमे रेपुटेशन आसो तमे जेतेबेले कौन सी फेम पाई जाओ ऑटोमेटिकली तुमको रेफरेंस का सम्मान मिले टीचर तमे जो पाठ पढ़ते टीचर तुमको ब्लेम करते गाली दियंते रिव्यू करते पनिशमेंट दियंते किंतु तमे जो सक्सेस होल्डर हो जाओ टीचर को गाली मारते आगे लाइन रे बसी जे मो स्टूडेंट को एते बड़ा अचीवर नहीं पाए सो स्टूडेंट्स ट्राई इट हिट वर्ड रही रिलेटिंग टू फेम as well as reference फेम रो
एक्चुअली रिहोल्डर किए जे प्रकृति रे अचीव पाई जी कि रेफरेंस कोन एटा इंडिविजुअल में सब लोग माने and to dilate upon the awful retribution that would fall upon me. What is the meaning of dilate? Dilate in the sense दीर्घ समय पर्यंत कौन करे डिस्कशन करे आपको कोई भी प्रकार का पनिशमेंट प्रकृति रे दिया जितो रिट्रिब्यूशन होजे पनिशमेंट का दंड ये भले भूल कला हम संगठन कहीं आपको बताने कौन पनिशमेंट दबा सो स्टूडेंट्स I was convulsed not only with the terror but with the guilt of sacrilege. Actually, students, convulsed in the sense trembled. ମୁଁ ଧରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲି ମୁଁ ଧରିଲି I was trembled I was convulsed ମୁଁ ଧରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲି with nervousness ଏବଂ ମୋ ମନରେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଆସିଲା that is nothing but the guilt of sacrilege ନିଜକୁ ନିଜ ଗୋଟେ ଦୋଷୀ ବୋଲି ନିଜକୁ ଦୋଷ ସାବ୍ୟସ୍ତ କଲି ମୁଁ ମୋ ଦୋଷ କରିଛି ବୋଲି ମୁଁ ନିଜକୁ ନିଜେ କଣ କଲି କମିଟ କଲି ପ୍ରକୃତରେ ମୋ ମନ ଭିତରେ ମୁଁ ଭାବିଲି ମୁଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଦୋଷ କରିଦେଇଛି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦୋଷ କରିଦେବୁ କଣ କହୁ ଇଂଲିଶ ୱାର୍ଡରେ ସରି କିନ୍ତୁ ଏଇଟା କଣ ପ୍ରକୃତରେ କମ୍ପ୍ରୋମାଇଜ you must have to repeat yourself what type of a commitment you have done that ought not to be done furthermore यही क्या भूल रहा करिबनी एटा हम मिलला कौन one type of maximum correlation एटा हम लोग हां सैक्रिफाइस पर निजी के कमिट करिबा निजी के माने न मैं दोषी okay how could I tell his rank when he was in a bath towel and so small actually students all that glitters is not gold जनक अपीयरेंस देखि के तमे कहि परिबनी जे ये को लेवल रो अछि बोली सचिन कर गोटे फॉल्ट दिला कोन से तापर हाइट लेवल पे देखि देले कहले ये यही हाइट अछि मन को सांग अछि मो क्लासमेट अछि मु तने को कोन पर विश्वास करि परली टावेल पिंति एते बडे डेजिग्नेटेड बॉय पानी पाखरे छिड़ा आइछि अर्थ फुल पाखरे काटिंग फुल पाखरे तनु से निजे निजे आइडेंटिफाई करि करले से मिस्टेक करले मिस्ट अंडरस्टैंड भीतर रहि गेला प्रकृति में पर्सन का आइडेंटिफाई रहि गेला इनवेस्ट एक्चुअली फेनोमेनल स्फीयर और समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी जेतबे गोटे छोट पिला ता हाइट जा थाउ कि गोटे टावेल पिंदिछि अनकॉन्शियस बॉडी आ पानी हमर विशेष कर स्विमिंग तक छिड़ा हेछि से आइडेंटिफाई करिकनी ता देयर के ब्याच लागेनी से लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द क्लास इस आइडेंटिफिकेशन नथिला आ गोटे मन रखो तार कोनोसी प्रकार रेन्युसिएशन नथिला रिलेटिंग टू द केमिस एक्टिविटीज ता एम एमडी रहिला बडी किछि रेकग्निशन नथिला तो चर्चिल आइडेंटिफाई करि नथिला so students I determined to apologize immediately ମୁଁ क्षमापण କରିବାକୁ ଚାହିଁଲି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ I have done something wrong to you brother I opposed the importance in living preparation apologizing to क्षमापण so I approached the importance in lively preparation what is the meaning of a potent potent in the sense powerful जे पावरफुल एटिला के हमरे काकू तो अप्रोच करे वो आगे आगे चलेली वो जी प्रिपरेशन माने वो बॉडी रे गोटे कंपन हेबा कंपन प्रिपरेशन सिगरी इन इंग्लिश थ्रिलिंग प्रिपरेशन मो टुडे गोटे कंपन जाता हला एवं मु कोन हेली नर्वसनेस को प्रिपरेशन की हेली तो नर्वसनेस तो ओये रे पाइ जो हम कहि जो छानिया हे जीवा नर्वसनेस फील करबा दैट इज प्रिपरेशन सो okay ask me I am very sorry I said I mistook you for a fourth for God I am very sorry I am taking the apologization so you must be learning about students to err is human to forgive is divine मनुष्य नामई भूल अछि एवं जोडी मानविकता अछि सेठी क्षमा अछि तब धर्म होछि बडे सत्य गुण अवश्य so students I am very sorry I said I mistook you for a fourth boy. मु अपन तो कंसीडर करी आछि जे प्रकृति तमे गोटे फोर्थ स्टैंडर्ड बॉय बोली मु भाबी नेतिले इट वाज मिस्टेक इट वाज कंसीडर टू समथिंग रॉन्ग यू आर सो स्मॉल तमे बहुत छोटा it did not seem at all placated by this किंतु हमरे केबे placated in the sense काम में फुल ये कथा कहले सत कि अमेरिका जीवन रे किछि सेटबले हम ऑलरेडी किछि परिवर्तन अछि से पूरा रिवेंजफुल मूड रे अछंती तते कोन पाई मतलब द रीजन ऑफ पुशिंग मी टू द बैटिंग मते कोन पाई हेलिलो एवं से जेते प्रकार कॉम्पिट का कंसोलिंग इन वर्ड कहले ताजे मते ताको माइंड रे किछि छे जायला तापर से कोन कन्वर्सिंग करते देखो placated in the sense calm or शांत so I added in a most brilliant recovery
ଟିକେ ରିକଭରି କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ରିଲେଟେଡ ଟୁ ସମ୍ ଟାଇप ଅଫ ସ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଆଟିଟ୍ୟୁड ମୁଁ जो भूल काम କରିଛି ସେଠି ମୁଁ କେମିତି କଣ କନସୋଲ କରିବି କେମିତି ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବି କେମିତି ମୋଟିଭେଟ କରିବି ଆମକୁ by which he will forget the miss opportunities completed by me to him ତା ପାଇଁ ମୋର जो ଖରାପ ବ୍ୟବହାର ରହିଛି ସେଟାକୁ ସେ କେମିତି ଭୁଲି ପାରିବେ ସେ କଣ କହିଲେ ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ my father ଚର୍ଚିଲ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ବାପା who is a great man ସେ ତ ଜଣେ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି but a small in house so small ମୋ ବାପା ଏତେ ବଡ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଥିଲେ ହାଉସ ଅଫ କମନ୍ସ ର ଲଣ୍ଡନ ର still then he was very small so far as height is concerned ତେଣୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ମହାନ ଲୋକ ଆମରେ ମୁଁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲିନି ଆପଣଙ୍କର ଏତେ ପୋଟେନସିଆଲିଟି ଅଛି ଏତେ ସବଜେକ୍ଟିଭ କ୍ୱାଲିଟି ଅଛି ଏତେ ଏକ୍ସଟ୍ରା କରିକୁଲାର ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ ଅଛି so that you are small ତମେ କଥା ସେଠି କଣ ଅଛ in comparison ତମେ ମଧ୍ୟ small ଅଛ so at this he laughed ଏଇଟା କହିଲା ପରେ हमने कौन कले टिका मस्ती कर लिया and after some general remarks about my chief and how I had better be careful in the future signified that the incident was closed actually students laughter is the panacea to all difficulties panacea one type of a treatment adapted for any type of a disease जे कौन सी डिजीज की यदि हमें आरोग्य लाभ करेगा सेति पे जो मेडिसिन यूज है सेटा होची पानिश इन सिमिलर वे स्टूडेंट पर रखा हम ह्यूमन पर्सनालिटी रे सबठारो बेस्ट पैनिशिया होची लाफ्टर यदि जने हॉस्पिटल तम सामने रखिए तम माइंड टिके रिलैक्सिंग हो जाए तम माइंड जो रिवेंजफुल है दैट इज गेटिंग टू बी रिलैक्सिंग सूथिंग टिके रिलैक्सिंग का सूथिंग हो जाए एंड दैट हैपेंड टू विंस्टन चर्चिल एज वेल एज अदर स्टूडेंट्स try to understand after some general remarks about my chief and how I had better be careful in the future. Signified that the incident was closed. What is the meaning of chief? Chief means impoliteness. वो जो अभद्रामी व्यवहार impoliteness chief. impoliteness वो जो व्यवहार प्रतिला impolite व्यवहार दिला अभद्रामी दिला का प्रति आम्री प्रति जेतेबेले आम्री टिका हॉस्पिटल में कथा सुन ता पर टॉपिक गेटिंग टू बी क्लोज so topic was approaching versatility. Okay, students. Thereafter, Unit 4. I have been fortunate to see a good deal more of him. In times when he has a difference in age, it is not so much important as it is at school. Actually, students, try to understand. In every academic line, you can't judge anybody's age. So आज एक्सपीरियंस ऑफ पर्सन आमे खाली कहबानी जे जहार एज अधिका अछि से टैलेंटेड लोक होय वो जेतेबेले सब थिले पुराना लोक माने टैलेंटेड पर्सनालिटी थिले कि वर्तमान पीढ़ी से काम करके हारि गए और नहीं हारि गए ସେମାନେ कंप्यूटर साइंस रे एक्सपर्ट नो कंप्यूटर साइंस रे एक्सपर्ट आ गोटे कथा मन रखो जेतेबेले आमे जदि कोनसे लोक को कहबा जे प्रकृति तमे बहुत ज्ञानी लोक अछि सेतेबेले युवक जदि से ताको एक्सपीरियंस को कहबे वर्तमान प्रेजेंट एज होची मॉडर्न है तो एज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ये एज रे जेते जे एक्सपर्टाइज करछन समान से टैलेंटेड हे पारी तो एज बेसिस रे हमें कहबानी गोटे लोक 50 एज रे अछि गोटे लोक 40 एज रे अछि 40 एज रे लोक खराब पाठ पढेइबो गोटे 50 एज रे लोक भलो पाठ पढेइबो दैट इट डिपेंड्स अपॉन वंस आर्टिकुलेशन ये केते आर्टिकुलेट करि परुची ये केते रिसर्च करि परुची ये केते थिंकिंग प्रोसेस को आसी करुची सेटा होची भाइटल देखो चर्चिल थिले 4 स्टैंडर्ड आम्री थिले 6 स्टैंडर्ड किंतु दुई जण जनकर कैलिबर्टी से विश्व कले शो अप कले दुई जण जनकर गले कोठी की ताको अपॉर्चुनिटी ताको दिया गला टू शो देयर लीडरशिप क्वालिटी अपॉर्चुनिटी ताको मिलला टू एडमायर द पीपल अपॉर्चुनिटी दिया गला फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पॉपुलर हम इंडिविजुअल सोसाइटी में से कौन सर्विस करे एंड वी मस्ट हैव टू देयर टू I have been fortunate means lucky to see a good deal more of them. आम्ही तो कहे मैं किसी भलो गुण देखिबा को चाहिए ए समाज रे मन रख पिले जे फर्स्ट डिवीजन पाउची तार भलो क्वालिटी अछि पाठे रे कि जे थर्ड डिवीजन पाउची तार साथरे किसी भलो क्वालिटी थिबो बुझि पछन नाही तुम गुडे एग्जांपल देली सचिन तेंदुलकर कथा तमे पिले मन रख आ गुडे भलो कथा कहूची रामकृष्ण परमहंस बहुत टैलेंटेड पर्सनालिटी किंतु पुआ रामकृष्ण परमहंस गले 83 रे स्वामी विवेकानंद गले 39 रे वो रामकृष्ण का डायनामिक अधिक थिला ना स्वामी विवेकानंद का अधिक डायनामिक थे
Till now, प्रत्येक स्तर में देखते विवेकानंद का कंट्रीब्यूशन रही है मोरल एजुकेशन में। तो हमें कई बार जैसे एज डजंट मैटर, the matter is one's thinking process, one's action oriented result that will benefit you to higher position। अमरीका सहित केवल गोटे ही मिसमाप घटिथिला near the bath pool, near the swimming pool, किंतु ता परवर्ती स्टेज रे विंस्टन चर्चिल किछि एक्सपीरियंस गेन कले कहां पाखरु अमेरिका पाखरु। तेणु तमे माने मध्ये तमर जो सीनियर अछन भाई नहीं तमर को किछि एक्सपीरियंस गेन करबा कथा रिलेटिंग टू योर लर्निंग प्रोसेस। So what the topic is, I have been fortunate to see a good deal. Good deal means money maximum मैं कौन पाइले मोर अगेन अमेरिका पाखरु मो किछि प्राइस दिले advice suggestion in times when 3 years difference in age is not so important as it is at school। तब तो 3 year difference का किसी मैटर नथिला। We were afterwards to be cabinet colleagues। हमनी रहले कोन कैबिनेट मिनिस्टर आउ चर्चिल रहले कैबिनेट मिनिस्टर। हमनी रहले हमनी रहले कैबिनेट मिनिस्टर चर्चिल रहले कैबिनेट मिनिस्टर। जेते बेले समान प्रोफेशन में लोक माने रहथि से पेटु कहा having same profession, having same designation, having same occupation। तो दुई जन जका रहले कैबिनेट मिनिस्टर भाई कैबिनेट कॉलिंग्स फॉर गुड मेनी इयर्स अनेक वर्ष धरि दुई जन जका कैबिनेट मिनिस्टर रहले। It was thought incongruous that while I apparently stagnated in the lowest form, what is the meaning of incongruous? Incongruous in the sense unsweetable। जेते बेले मु लोअर स्टैंडर्ड रे थिली मते बहुत टिके डाउनवर्ड लागुतिला मु टिके एक्चुअली माइंड अपसेट रहउतिला कारण से थिले 6th स्टैंडर्ड रे मु टिके 4th स्टैंडर्ड रे किते जेते बेले कैबिनेट कॉलिंग हम हे गेलु वी आर कंसीडर्ड टू बी बेस्ट कॉलिंग्स बेस्ट फ्रेंड्स वी जन जका भितर कि फ्रेंडशिप आदान प्रदान करिला किछि ना किछि हम निजे को निजे रिजल्ट्स कलु निजे को निजे रेक्टिफाई करिलु अपन तो मु किछि सजेशन नेली वो बापू से किछि मध्ये सजेशन नेले। So students, incongruous means unsuitable, stagnated in the sense downfall। मोर जेते अधपतन घटुतिला प्रकृति 4th स्टैंडर्ड रे वो कैलिब्रेटी एते नथिला तो एते हाईली क्वालिफाइड कम्पिटिशन फॉर नॉलेज इज कंसर्न। Still then I should gain a prize open to the whole school for reciting to the headmaster 1200 lines of a Macaulay's Lays of Ancient Rome without making a single mistake। Try to understand the topic, students। तो तुम कहले गोटे पिला मैथमेटिक्स रे 0 रखि पारे मैथमेटिक्स रे 30 रखि पारे किंतु गोटे बेस्ट सिंगर अछि से पिला को ऑटोमेटिकली सब चैनल रे लोक माने प्रेफरेंस करे लाइक तमे क्लास रे रखिलो इकोनॉमिक्स रे 100 आउट ऑफ 100 हम कोचिंग जानले ये किछि 100 आउट ऑफ 100 किंतु गोटे पिला को मैथ रे जेति कॉम्पिटिटिव करेला तब ओडिसा डालू राइट अंडरस्टैंड माइंड अंडरस्टैंड। सो हमें कहि परिबनी कि को फील्ड रे दिने एक्सपर्टाइज हे करिवो तेनु 4th स्टैंडर्ड रे पढला बेर ताको एते नॉलेज नथिला बट से रिसाइड करि पारुले से आपूर्ति करि पारुले कोन आपूर्ति करि पारुले जोटा के रखुले लॉर्ड माकुले हु इज लॉर्ड माकुले यू मस्ट बी नोइंग अबाउट माकुले मीनिंग 1835 लॉर्ड माकुले प्रॉपर इंपोर्टेंस दे दिले फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एजुकेशन ऑफ इंग्लिश इन इंडिया। भारत वर्ष रे इंग्रजी शिक्षा चालू कली लॉर्ड माकुले प्रथम माकुले पेनिट रे सपोजिशन आनी दिले ताको फुलफिलमेंट कले किए राजा राममोहन राय जोति पई इंडिया रे इंग्लिश हला इम्प्लीमेंटेशन जोति पई हमें रिमेंबर करू जदि के पायोनियर अछंती इंडिया रे इंग्लिश इम्प्लीमेंटेशन इंडिया रे हबो बोली इंडियन से होते राजा राममोहन राय और ब्रिटिशर लॉर्ड माकुले जो लिखिथिले तो विशेष करी सेटा तिला 1200 माइल्स सफर लाइंस 1200 लाइन रो गोटे रहिला कोन के पोएट्री एवं रिसाइटेशन करिथिले किए विंस्टन चर्चिल। So students, relating to Lays of Ancient Rome without making a single mistake से जेमिति आकृति करले कविता का तो गोटे मिस्टेक मध्ये से कविता नथिला that was the portrait of Winston Churchill। I also succeeded in passing the preliminary examination for the आर्मी पे जो एंट्रेंस का प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन हेतिला सेतिरे मध्ये विंस्टन चर्चिल सक्सीडेड हेतिले। आर्मी यू मस्ट बी नोइंग अबाउट आर्मी रे चीफ के कोन कह जाय जनरल आर्मी रे चीफ जनरल नेवी रे एडमिरल
आउ हमर एयर रो मास्टर सो स्टूडेंट्स तापर सुप्रीम नले किए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बी विंग्स रो हेड है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया so students I also succeeded in passing the preliminary examination for the army while still almost at the bottom of the school रो lower standard के लिए जाता so far as my schooling is concerned I was in the bottom so far as my intellectual ability is concerned I am at the top. This examination seems to have called forth a very special effort on my part. ये एग्जाम द्वारा मो जीवन रे बहुत गोटे परिवर्तन पिला देखा गला फॉर मेनी बॉयज आर एबव मी इन द स्कूल पेंडिंग इट हमर बहुत बॉयज थिले जो माने फेल नहीं थिले एग्जाम रे किंतु एग्जाम का क्वालिफाई करला थिले आणि ताकू वाले एजुकेटेड एग्जाम स्पेशली फॉर द डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट आई पीस ऑफ गुड लक पीस ऑफ गुड लक इन द सेंस ऑफ अपॉर्चुनिटी मते मजा बहुत सुविधा सुजोग गोटे मिल जाई थिला केमिति we know that among other questions we should be asked to draw from memory a map of some country or others जेतबेले बिले मन रखो हमर सिलेक्शन प्रोसेस वाला गोटे होची रिफिल आ गोटे होची इंटरव्यू ऑफ वायरस रिफिल करे हमको कोन करियो बी एजुकेटेड करियो मु बिलान सर्कुलेट होइबी तमे गोटे आर्मी रा ऑफिसर हबो तमे जानिथिबो सीडीएस कंबाइंड डिफेंस सर्विस मतलब कि ग्रेजुएशन लेवल सिलेक्शन प्रोसेस जेतबेले तमे आर्मी ऑफिसर हबो तमे जे बॉर्डर एरिया रहइबो कोठी जम्मू काश्मीर रे and it is your inclination to set the map of the Jammu and Kashmir within the एटा प्रकृत तमरा विवेक ऊपर डिपेंड करे तम कंसर्न ऊपर डिपेंड करे जम्मू एंड कश्मीर का मैप तक माने रखता है सब्सक्राइब को क्वेश्चन कंसीडर करते हैं हमें प्लस 2 लेवल पे पाठ पढ़ते बहुत पिला भाबुचंदी मु हिस्ट्री रखि ठीक करबी पड़िबे इकोनॉमिक्स अछि पॉलिटिकल साइंस पढ़िबे पॉलिटिकल साइंस से ज्योग्राफी पढ़िबे किंतु ऑलमोस्ट ऑल द टॉपिक्स आर रिलेटेड इंडियन हिस्ट्री इंडियन पॉलिटिक्स इंडियन ज्योग्राफी इंडियन इकोनॉमी साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेटा हम ପାଇଁ डेली यूज जेंता हम ପାଇଁ खाद्य वस्त्र वासगृह एगुडा का हम ପାଇଁ एसेंशियल स्टूडेंट्स और सबिधार को बड़ डायनामिक मन रखो ऑलवेज ड्रॉ द मैप्स मैपिंग का बहुत इंपोर्टेंट करे जो मैंने ज्योग्राफी पेपर अवश्य हमर ज्योग्राफी के अवश्य ना थी कि लास्ट के पेपर हमर ज्योग्राफी के किछि नोट अब हम सिक्योर बोर्ड का 90% ज्योग्राफी ऑफिशियली और से माने भी मतलब ऑलमोस्ट लोग पे जीपे वाले हमर एक्सपेक्टेशन अछि कारण ज्योग्राफी रे जेतबा हम पाठ करछे भाइटल सी होची मैपिंग तो जदि हम ज्योग्राफी न रखि जे हम पर मैपिंग करबा किछु भूल की कारण हम पाठ करछे एरिया को पांचटा जोन रे डिवाइड कर दियो नॉर्थर्न ईस्टर्न साउदर्न ईस्टर्न वेस्टर्न सेंट्रल चारिटा जोन को मैपिंग कर दियो चारटा जोन को आठ मिक्स कर दियो तो ऑटोमेटिकली इंडिया में आपको भाग कर दियो तमे देखिबो एबे गोटे छोटकाटिया वार हेतिला का भीतर इंडिया पाकिस्तान भीतर सो कॉल्ड वार विदिन द बॉर्डर केका बॉर्डर को एंट्री करनाती सेठी किंतु गोटे ग्राफिक्स चालितला जियोग्राफिकल चैनल गोटे करूथिले जणी लोक से लोक किए एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजित द बेस्ट पर्सनालिटी वर्ल्ड ओवर से लोक को जानिया के चाहे प्रकृति रे लोक किए जो जगह टेररिस्ट कैंप से जगह रे जो कितना प्लेसमेंट ता ऊपर कौन सी लोग भी सिटी जान जाइला पुलिस आ गला कौन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन सेठी हमें कहि देबा कोन ना हमें कुछ इंडियन माने एमपीएल माने सब होछन डिसीजन लेबे जणे लोक पिन पॉइंटेड ताका करे अभिनय सेही गडी सामुएल डॉट प्लानिंग करले मारिले कहा को लाडेन पाकिस्तान रो कोड रहउती लाडेन से लोक पिन पॉइंट करले बाराक ओबामा मुस्किल अमेरिका रे राष्ट्रपति माने व्हाइट हाउस रे 80% लाइव टेलीकास्टिंग होछि से लोक पोटेंशियलिटी दिले नाही तेनु करी हमर पर गइब उद्देश्य एक चैप्टर में जो हमको किछ कोटा हाईलाइट करूची टू नो समथिंग अबाउट geographical maps. So students try to understand this point. The night before, by way of final preparation, I put the names of all the maps in the atlas into a hat and drew out the new plan. बेले बेले पिला माने हमको गोटे अपॉर्चुनिटी मिल जाए कोन अपॉर्चुनिटी सब पिला माने जीवन रो भलो पाती सिलेक्शन करिबा पाए सिलेक्शन नुहे तमे बाहर गोटे पथ सिस्टम गलो से तुम सिलेक्शन हेल्प कर दे तो एकदम देखाइबो तमे ड्रेस क्लियर नहीं जाओ सिलेक्शन अछि ना नहीं हम लाइव गोटे सिलेक्शन प्रोसेस रो बात कोन है देखिनियो हमें बेले बेले किछि प्रेडिकामेंट आनु तो में आपटा आंटीबा आपको भलो मैपिंग कोरेगा विशेष कर यूनियन टेरिटरी तो एरिया कर दियो भलो बन नहीं जीवो आ सबुधर जानि जीवो गोटे बहुत बढ़िया कॉम्पिटिटिव कंट्री अछि जो कंट्री की समस्त भलो मानती विशेष करी तमे जानि जीवो न्यूजीलैंड यार कैपिटल ऑफ वेलिंगटन
ଯାହାର କ୍ୟାପିଟାଲ ୱେଲିଂଟନ ଏବଂ ସେ ରାଷ୍ଟ୍ରର ପିଲା ମନେ ରଖ ତମେ ଯଦି କମ୍ପିଟେଣ୍ଟଲି ଦେଖିବ କୌଣସି ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇନକମ୍ ହାଇଅର କିମ୍ବା ଲୋୟର ରହୁଛି particularly ଡେନମାର୍କ କଥା କୁହ ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ କଥା କୁହ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ କଥା କୁହ ସେ ଦେଶର ଲୋକମାନଙ୍କର ଅପ୍ ଆଣ୍ଡ ଡାଉନ୍ ନାହିଁ ତାଙ୍କର ଜିଡିପି କୁହ ବିଶେଷ କରି ଗ୍ରୋସ୍ ଡୋମେଷ୍ଟିକ ପ୍ରଡକ୍ଟ କଥା କୁହ କିମ୍ବା ପରଫେକ୍ଟ ଇନକମ୍ କଥା କୁହ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଟ୍ରାନ୍ସକ୍ରିପ୍ଟ ବହୁତ ବଢିଆ ଡାଇନାମିକ ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କଣ୍ଟ୍ରିଜ न्यूजीलैंड ର ପ୍ରାକ୍ଟିସ से एग्जाम पूर्व दिन कौन कले प्रैक्टिस कले ये विजडम सर्च एक्चुअली फॉर्च्यून परसेक्स द आइडियल बेले बेले एमिटी है जाए हमें अपॉर्चुनिटी खाली जो गोटे पढ़ी देतो बेले बेले एग्जाम में गोटा को पढ़ी देतो दैट हैपेंड टू विजडम सर्च देखो स्टूडेंट्स आई अप्लाइड माय गुड मेमोरी टू द ज्योग्राफी दैट डोमिनियन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ डोमिनियन डोमिनियन मींस टेरिटरी और डोमिनियन मींस कंट्री तुम से कंट्री का डोमिनियन नाम कौन थिला पर्टिकुलरली न्यूजीलैंड से कोन कले तार पटे पटे हैक कर नेले इलेक्ट्रिक टोपी कोट टोपी करी करी से आंसर डिगराइज कले केमति एग्जाम पूर्व तमे कोन करबो एग्जाम पर लास्ट मोमेंट रे तमे पूरा टॉप मोस्ट सिलेक्टेड गुला देखि जाओ एगुला को बहुत पढ़िबार चांसेस अछि जदि लॉक हमको पेपर करा दे जोटा हम प्रेडिक्ट करूछु सेटा दे इंपोर्टेंट वे पढ़ि आसला हम काटो वी आर द बेस्ट जनरल सो दैट आवर अपॉर्चुनिटी पर्सन sure enough the first question in the paper was draw a map of New Zealand से इतने बड़ा प्रेडिकमेंट प्रिपरेशन कर दिले एवं फास्ट क्वेश्चन पड़ी गला करा draw the map of this was what is called art of Monte Carlo and in plane and I ought to have been paid 35 times my stake New Zealand रो मैपिंग पाई मो 35 टाइम्स कोन करती प्रैक्टिस करती ठीक है ताले पड़ी जीवो की ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ ୱାର୍ଡ ଏଠି ୟୁଜ ହେଇଛି ପିଲେ ମଣ୍ଟେ କାର୍ଲୋ ହଉଛି ଗୋଟେ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ର ଟାଉନ ଏବଂ ଯୋଉମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ପିଲେ ପଢିଥିବେ ରିଲେଟିଭ ଟୁ ତ ଜାଣିଛି ଆଇସିଏସସି ପିଲାମାନେ ଆମର ଟିକେ ଲିମିଟେଡ ଅଛନ୍ତି ଆମର ମଣ୍ଟେ କାର୍ଲୋ ହଉଛି ଗୋଟେ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଟାଉନ ଏବଂ ଏଇଟା ଫେମସ ରହୁଛି କାହା ପାଇଁ କ୍ୟାସିନୋ ଅଛି କ୍ୟାସିନୋ ଇନ ଦି ସେନ୍ସ କ'ଣ ପିଲେ କହିଲ ପ୍ଲେଇଂ କାର୍ଡସ୍ କାର୍ ପାଇଁ ସେ ଜାଗାଟା ବହୁତ ରେପୁଟେଡ ଥିଲା କ୍ୟାସିନୋ ଯେମିତି ଆମର ଜାଣିଥିବ ସ୍ପେନ କ'ଣ ପାଇଁ ରେପୁଟେଡ ବୁଲ ଫାଇଟିଂ ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସହରର ପିଲେ କିଛି ନା କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ରହିଛି ଏବଂ ଏଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ କଲେ ସେ ଅପରଚୁନିଟି କଲେ ସେଟା ମନେ ରଖ ଯୋଉମାନେ ପ୍ଲେଇଂ କାର୍ଡସ୍ ବାବଦରେ ଜାଣିଥିବେ ଆମେ ବିଶେଷ କରି ତାସ ଖେଳରେ କ'ଣ କରୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଫେଣ୍ଟି ଦଉ ସବୁବେଳେ କ୍ରେଡିଟ କରୁ ଏ ସବୁ ଯାକ ଭଲ ଭଲ ଗୁଡାକ ଟିକା ହଉ କି କଲମ ହଉ କି ଆମର ଯୋଉ ଭଲ ଆମେ ପାୱାର ହୁଏ ମନେ ପଳେଇ ଆସନ୍ତା ଯଦି ମୋ ଆଡକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା ମୁଁ କ'ଣ କହିଲି ୱିନର ହେଇଗଲି ଆଉ ହାଇ ରେଟିଂ ହେଇଗଲି ଏଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମେ ଯୋଉଟା କହୁ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଆମର ଗାମ୍ବଲ गाम्बल माने कोन होची हमर विशेष करी जुआ खेल हमें सिलेक्शन नेले यदि मु कहबे तमे कोन सी इंग्लिश लिटरेचर रा हमर पर्टिकुलरली दुटा चैप्टर ऑलरेडी पढ़ी के गलो से दुटा चैप्टर ने पढ़ी गेला हमर रोज पोएट्री तमे के हेला एटा गाम्बल के सक्सेस गेला तो ये एटा बोलिला हम सक्सेसफुल so students right to the final point this was what is called at Monte Carlo and plane in the sense art of gambling. So students, and I ought to have been paid 35 times master. However, I certainly got paid very high marks for my paper, and that paper was tough because my selection was superseded by the final marking. So selection का बहुत बढ़िया scoring यही दिला, highest scoring यही दिला. That's why I was qualified for the selection process. Okay, student, this was the top actual topic. And another thing is almost all the chapters of the second year are science commerce. Relating to English, each and every chapter has a moral thinking. प्रत्येक chapter का गोटे moral thinking करछी. हमें grammar is something different language, but when we discuss about literature, each and every topic students of second year. My greatest Olympic prize on examination, the portrait of a lady, the magic of a teamwork, the development of a polio vaccine. ये जो फोर्थ चैप्टर रहला प्रत्येक गुडा किछि ना किछि मोरल लेसन रहिछि तो मो मतरे ये टॉपिक टाକୁ अगेन एंड अगेन रीडिंग करो जहां जोटा डाउट रहछि क्लास रे एंडिंग बेले को जे क्वेश्चन करो इट विल बी वेल अप्राइजिंग एंड वेलकम टू एवरीबॉडी आरो एमसीक्यू क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास रे देई दबा और क्लास रे दिके कहबो वी विल हैव टू डिस्कस रिलेटेड टू रिपोर्ट राइटिंग नेक्स्ट क्लास रे रिपोर्ट राइटिंग करिवो और एमसीक्यू क्वेश्चन